So sound part second, that is what lecture second. So we deal with the user and applications of sound and what is the remaining. So remaining part is the now next is reflection of sound. So as we know that reflection of light, what they have a rule, so light reflects when somewhere the obstacle is there. So incident light and this was reflected after reflection, I and R, if we divide with the normal, we get equal angle. Right what? So angle of incident is angle of reflections. Similarly to light, sound reflect the same way, or you can say sound follow the same way of reflection. That is how the light is. So here I know earlier that sine I is equal to sine R, the same rule of Snell. Then what second rule of Snell? The normal incident light, reflected light, similarly is the sound, half follow the Snell rule also. Snell's rule similar to light. So reflection process have the similar with the light. One thing. Another is, so reflection uses of, I will see examples. Suppose that echo. What do you mean by the echo? So echo is the same happening of reflection. So if sound going on, so he light, so any obstacle is there, so repetition of sound with a reflection. What do you mean by the echo? So echo is the phenomena of repetition of sound source. So repetition of sound waves by reflection थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद साउंड का जब रिफ्लेक्शन होगा उसको बार बार आपके पास आने को इको कहते हैं. एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एटलीस्ट 2.1 सेकेंड इंटरवल will be required to hear the next echo. जो साउंड आप लेते हैं, ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो बोला आपने और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड आपके कान तक आई, इसके बीच का इंटरवल देयर मस्ट बी और नॉट लेस देन 0.1 सेकेंड. अगर ऐसा होता है दिस इंटरवल, देन यू आर एबल टू हियर विथ योर ईयर द नेक्स्ट साउंड, नेक्स्ट इको. इको का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपको कम से कम ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बिटवीन का 1.1 सेकेंड का इंटरवल होना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू हियर लिख दिस. So that is echo. Echo is the repetition of sound wave by a reflection after getting obstacle. Then what? Reverberation. That is so called REVERBERA. Reverberation. Reverberation is again the process of reflection of sound in which multiple, or you can say persistency of sound, or you can say persistent sound
after multiple reflection. Persistent sound after multiple reflection by obstacles. See, like हाल में किसी बड़े हाल में रिफ्लेक्शन होते हैं तो साउंड आप बोलते हैं या किसी से माइक से आवाज़ आती है दीवारों से टकरा के, बाई रूफ, बाई रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रूफ से, वाल से, व्हाटएवर, एवरीवेयर से। तो ऐसा कई बार रिफ्लेक्शन होने से एक साउंड का फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहता है, परसिस्टेंट वो आवाज़ देर तक रह जाती है, सो कॉल्ड रिवर्बरेशन। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको and reverberation of sound is the very great example of the reflection of sound. Another uses and multiple reflection का other use, megaphones, stethoscope, as you know. Another examples with the help of, if we go for the medical science, सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का और भी एग्जाम्पल यूज करते हैं इन केस ऑफ स्टेथोस्कोप। व्हाट डू मीन बाय दिस वन, स्टेथोस्कोप? सो स्टेथोस्कोप इज व्हाट द डॉक्टर यूज, क्लिनिकल प्रोसेस में हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का, बाय व्हाट, बाय विच, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन हियर द साउंड produced by heart or lungs, or you can say inner organ of the body. So sound produced by the internal organ of the body is what? By the process of reflection or reverberation. So reflection of sound ही होता है, and doctor use this one, so called stethoscope, especially the sound produced by the heart and lungs. Now next is the so called ultrasound or ultrasound. This is again a instrument used by doctor at clinical process in which the reflection of sound will get again a clinical instrument, right? So similarly in medical use we'll have next things, so called electrocardiograph. What do you mean by the electrocardiograph? Applications of sound in medical science, one instrument, electrocardiograph. See, here is the graph is there. The term graphs tell you what? That is nothing else but the vibration of heart. जो हार्ट का प्रोसेस है, वेव ऑफ द हार्ट्स, you know that hearts have the fixed movement or the fixed the process, or you can say then what electrocardiograph can I say? This is the what graph of heart wave, etc. like that somewhat scanning. So heart wave जो आती हैं उसका पेपर पे अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से ग्राफ लेते हैं, दैट इज सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द आवर मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट. सो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड समवट टू डिटेक्ट द any damages inside the heart. So image of heartbeat you can see. So this is how we are going to take care of the usage and application of the sound. So in human ear
Very good example. What we have to use all these things, sound and organ, what we have so called human ear. We go to, I think, imagine the ear of human or structure of human, whatever. Here is the nerve, here is the somewhat act like a cochlea, pinna. Here somewhat cochlea, auditory nerve. Cochlea, COCH. Cochlea, auditory nerves. What is very important? Pinna is here, and some other parts of the ear, so called hammer, heavily strip, etc. Eardrum even. So, somewhat eardrum. So, what is the role of pinna? ये कान का outer system. This is so called pinna. So pinna is the works as the collective body for what? For sound. Surrounding sound का collection करता है. Collection of sound. कौन सी sound जो surroundings में है. So what is the role of pinna? That is collection of sound from surrounding. जो आपके चारों तरफ की आवाज है उसका कलेक्शन करने का काम करता है पिन्ना. सो सिमिलरली ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेशन प्रेशर क्रिएट्स. ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रेशर. वाइब्रेशन प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द ईयर. So what do this cochlea, COCHLEA. So function of cochlea are what? ये जो आपने वाइब्रेशन प्रेशर देखा है ईयर ड्रम का वर्क, ये आगे बढ़ाता है वाइब्रेशन प्रेशर को, तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है. विच वन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कॉक्लिया. और कॉक्लिया ही खराब हो जाता है जो आदमी को कान का सुनाई नहीं देता. तो स्पेशली कॉक्लिया का वर्क क्या आता है? मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सो वाइब्रेशन प्रेशर दैट इज व्हाट वेव, इसको चेंज करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. I think you should know that is our brain works how. कैसे हमारा दिमाग काम करता है, किस चीज़ की चीज़ों को समझता है. सो कह रहे से ब्रेन हैव अ नर्व्स. If you are imagining like this, brain have nothing for sensation. Only this is the nerve which works at electrolytes. The nerves have a chemical, and chemical that is, as you know, the what chemical, which type of chemical is there? The electrolytes. So what electrolytes means? The charges is there with that. Positive or negative charge is there. So in case of any graph or neuration या sensation, दो न्यूरोमीटर और कौन से nerve system works as a conductor and with the help of chemicals, so electrolytes. सो ब्रेन को नर्व से जाकर के केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं.
in the form of charges, nothing else. And these signals and these charges gives everything to brain. So I think the cochlea works what? वाइब्रेशन प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज देयर? ऑडिटरी नर्व्स. सो ये नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर के ब्रेन को पहुंचाती हैं. इलेक्ट्रिकल नर्व्स ये सीन होगा. So now next is electrical auditory nerves. ऑडिटरी नर्व्स आगे चलेंगी टू ब्रेन. सो ब्रेन को ऑडिटरी नर्व्स पहुंचती हैं और देती क्या है? नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन. सो ब्रेन का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करना एंड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ chemical and find out what is going on. So can I say imagine the brain का वर्क कोई सुनते हैं हम जो कान से आपकी आवाज, ये ब्रेन नहीं सुनता है. ब्रेन को सुनने समझने से कोई मतलब नहीं है. जैसे तुम बोलते नहीं हो कभी, अब हम तुमको देखते हैं आंख के आंसू निकलते हैं तो ब्रेन को पता चलता है कि आप रो रहे हो. ये तो आप अगर आवाज से नहीं रो रहे हो तो आंख से आंसू देख करके मेरा ब्रेन समझता है कि यू आर वीपिंग राइट नाउ. सो क्या कह सकते हैं? ब्रेन सुनता है या ब्रेन देखता है? अगर ब्रेन देखता है तो कान बंद कर दो, सारी चीज देख ले. और ब्रेन सुनता है, ब्रेन देखता है तो आंखें बंद कर दो और आपको मान लो पिन चुभो दो, तो पिन देखा नहीं आपने, पिन चुभी तो ब्रेन को पता चलता. अगर हम किधर इंजेक्शन लगाते आंख भी बंद रहेगा तो ब्रेन को पता चलता है. तो कहना इसे कि ब्रेन देखता है, नॉट पॉसिबल. देख करके महसूस होता है, इजंट इट. सुन करके नेवर. कोई नहीं बोलता है गूंगा आदमी तो भी हम सिग्नल देख के समझते हैं. नो, दीज आर द सेंस ऑर्गन विथ अस. God had given us organization of body very fixed. भगवान ने दिया है. बट सी आँख जितने चीज़ें हैं सेंसेशन होते हैं, सेंस ऑर्गन के सेंसेशन जो हमारे कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं या जीभ से टेस्ट लेते हैं या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है शरीर का, चमड़ी से टेम्परेचर को देखते हैं, गर्मी ठंडी लगती है महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं. ये सारे सेंस ऑर्गन एटलीस्ट लास्टली क्या करते हैं? नर्व सिस्टम को अपने सिग्नल्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो मोस्टली जो सेंसेशन होता है ब्रेन को, जो ब्रेन को आइडिया लगता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नथिंग एल्स. बोलने को ब्रेन को नहीं समझता. बोलने से हमारा कान समझ सकता है, देखने से आंख से महसूस होता है, लेकिन ब्रेन उस बात को नहीं समझता. छूने से गर्मी ठंडी, बर्फ को या हीटर को या अपने टेम्परेचर लिए या कोई पिनिंग चुबिंग हुई, इससे कोई मतलब नहीं है ब्रेन का. बिकॉज ऑफ ब्रेन हैव नो आइडिया विद दैट ऑल, राइट. तो व्हाट दे ब्रेन का मेन आइडिया कैसे लगता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड. केमिकल्स का रोल वहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल आ जाता है. तो केमिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन, दे गिव्स एवरीथिंग टू ब्रेन एंड देन आफ्टर दैट ब्रेन वर्क्स सिमिलरली. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ आवर व्हाट ईयर. So now we are going to give you the some, as you had taken reverberation or reflection का formula as D is equal to V is equal to time.
So here should be 2 because of what? Reverberation or reflection of light. And formula I had given to you earlier, that is what? Frequency nu is equal to 1 by T. Again next formula I have given to you, V is equal to distance by time. Alright? I have given all to you. So similarly we can say here the distance denoted in lambda by time. Isn't it? I had given you 2-3 terms in the form of unit, that is hertz, decibel, per second, whatever. All these things with you. Go for the numerical solving and exercise. I give you with the last moment with the help of this one what video we are going. So take care of the question and exercise what I had given to you. Okay.